Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we have to continue our paper Economic Botany and this is your lecture number 32, and in this lecture we will discuss another economically important plants, that is the timber plants. Okay, जहाँ के हमें यूटिलाइजेशन करसों कैंथर लगी वुड हिसाब यूज करसों काठ के नेकरे हमें फर्नीचर रहला के डिफरेंट wood related construction work रे हमें यूज करसों, that we have to discuss in this section. Let's discuss about this wood टिम्बर टिम्बर कहा के कहसु आमे वुडी प्लांट्स मान को कहसु जिन मानकर केस रे अमर पटा बना जाउछे वुड रो डिफरेंट इंडस्ट्री अमर वुड इंडस्ट्री रे नेकरी सेते के डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स लगा जाउछे जिन मानकर जिन प्लांट मानकर तकर स्टेम जि देखमा जदी बहुत मोटा रहउछे तार संगे संगे समनकर बहुत स्ट्रेंथ जदी रहउछे सेता के हमें यूज करूछु इन डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स रे एज वेल एज डिफरेंट फर्नीचर मेकिंग करबार लागि that are known as your timber bolikri kohuchu. Okay, so if you see the woody plant, the wood prepared for use in building as well as carpentry industry. The diagnostic features of the wood जेतले देखुछु wood के जदि मटिका डायग्नोस करबा दुईटा टाइप रो wood जनरली देखबार के मिलसी गोटेला पोरस wood आ गोटेला नॉन पोरस wood. पोरस माने काना मना वर्ड रो हमें बुझी पारुथमा पोरस माने हला पोर्स बियरिंग wood जेन वुड रे पोर्स माने थिबा कणा माने थिबा दैट आर नोन एज योर पोरस वुड एंड हमर जेन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हला एंजियोस्पर्मिक प्लांट केस रे जेन वुड्स थिस दैट आर हैविंग द पोर्स मोर नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट थिस राइट बट इफ यू सी द नॉन पोरस वुड जेनटा के स्ट्रांग वुड बोली कि हमें कंसीडर करमा the wood which are not having the pores जेनटा के हमर जिम्नोस्पर्म मानकर केस रे देखबार के मिलसी वन ऑफ द इंपोर्टेंट जिम्नोस्पर्म जेनते कि हमर पोर्स प्रेजेंट नहीं थे जेनटा के होचे हमर पाइन्स हला और पाइनस जा के कहूचो ओके तो सटा के कहूचो हम काम बोली कि दीज आर द नॉन पोरस वुड और दीज आर द वेरी स्ट्रांग वुड पोरस वुड के दुईटा कैटेगरी डिवाइड करि परमा जति हमर पोर माने जति रिंग रिंग हिसाबे थिबे बेले ताके कहमा हम रिंग पोरस वुड जदि थ्रू आउट द वुड जदि हमर पोर्स माने सब आडे जदि डिफ्यूज हेकरी थिबा सब आडे जदि सर्कुलेट हेकरी थिबा ताके कहमा डिफ्यूज पोरस वुड बोली कि कहमा रिंग पोरस वुड रे गुटे एग्जांपल हला ओक प्लांट र तर वुड एंड डिफ्यूज पोरस वुड र गुटे एग्जांपल हला हमर वालनट प्लांट र तर वुड जे देखमा दैट इज डिफ्यूज पोरस वुड देखबार के मिलसी तापर देखो हमें वुड के आउ दुईटा कैटेगरी रे भी डिवाइड करि परमा जेंटा कि सैप वुड आउ गुटे हला हार्टवुड सैप वुड the woods which are lighter in color जनमकर कलर जदि लाइटर कलर थिबा सेटा होच हमर सैपवुड whereas हमर ओल्ड ट्री मानकर जदि देखमा सेंट्रल रीजन रे there is presence of some kind of different chemicals जेंटा कि हमर टेनिन्स हला और अदर सब्सटेंसेस हमर सनो डिपोजिशन हेतिसी जेंटा कि हार्ड ब्लैक कलर दिसुतसी ताके कहसी हार्टवुड बोली करी कोआ जैसी एंड दे टुक गुड पॉलिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्नीचर प्रिपरेशन जेले फर्नीचर बना जैसे सुतन पॉलिश करा जैसी एंड जदि हमर वुड रे जदि पाइन्स जेंदा कि हमर हला पाइनस समानकर केस रे जदि टेनिन्स प्रेजेंट थिबा टेनिन्स रो प्रेजेंस रो लागि से पार्ट ता कना अधिक पॉलिश नबा नेक्स्ट असला हमर सीजनिंग ऑफ द वुड शॉर्ट नोट रहे से व्हाट डू मीन बाय सीजनिंग ऑफ द वुड सिंपली जदि देखमा सीजनिंग माने काना वुड रे जदि देखमा वाटर कंटेंट प्रेजेंट सी वाटर कंटेंट के बाहर करबार प्रोसेस के कहै जैसे काम बोली करी सीजनिंग ऑफ द वुड बोली करी कहै जैसे तो वुड रे जन हमर वाटर देखबार के मिलसे ताके कहै से हाइड्रोस्कोपिक वाटर बोली करी कहै जैसे एंड द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द वुड व्हिच इंक्रीजेस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द वुड दैट इज नोन एज सीजनिंग हमर वुड रे जदि वाटर प्रेजेंट थिबा बेला हमर वुड ता के स्ट्रांग नै हुए तो फर्स्ट वी हैव टू remove out this water by several methods that process is known as what seasoning of the wood due to seasoning the woods that get shrink हमर seasoning रो लागि हमर वाटर जदी बाहरी गला तो हमर जन wood रो तार जदी weight देखमा टिके का हबा कमी जिबा and this season wood is more stronger harder and stiffer okay the different method of seasoning আছে one of the method जेंटा कि air seasoning typically woods are remain as such in open air so they remove the water and lose weight हमें वाटर बाहर करा पर ले काना करमा सिंपली वुड मान को जस्ट बाहर पके दमा ताकि कहसो हमें एयर सीजनिंग एयर रो प्रेजेंस रे वाटर टब बाहर के बाहरी जीवा एंड से वो वुड ता तार वेट के काना करबा लूज कर दवा एयर सीजनिंग दिस इज ए लॉन्ग टाइम प्रोसेस जेंथिरे कि हमें जे देखमा approximately 12 to 30% final moisture content थिबा तली still 100% जदी वाटर प्रेजेंट थिला हमर approximately 70 to 80% हमर लॉस हेबा and rest हमर 12 to 30% हमर प्रेजेंट थिबा तली वाटर content let's see another process of seasoning that is called as your
kiln drying. ओके देखो आउट प्रोसेस हला जेंटा कि कहसी KILN kiln drying बोली कि कहा जैसे kiln drying here heat is applied to the wood in an enclosed space गोटे घर टे निया जिबा से घर भीतर wood के पके दिया जिबा एंड सनु हमर काना करा जिबा हीट सप्लाई करा जिबा एंड इटा गोटे शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड है एंड फाइनल मॉइस्चर कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 4 to 12% ही हमर वाटर प्रेजेंट थिबा लास्ट के ओके सो व्हाट डू मीन बाय kiln drying इन भी क्वेश्चन ऐसे यू हैव टू राइट दिस ओके सो शॉर्ट नोट जदी असला हमर दुइटा मेथड लिखि परमा एयर ड्राइंग और kiln drying दुइटा मेथड लिखि परमा इन केस ऑफ योर सीजनिंग ऑफ द wood नेक्स्ट हमर गोटे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लांट जेंडा कि टिम्बर हिसाब यूज करसों जेंडा कि कहसों टिक बलिकरी कहसों राइट तो तार बोटानिकल नेम हला टेक्टोना ग्रांडिस व्हाट डू मीन बाय टेक्टोना ग्रांडिस और टिक प्लांट रो बायोलॉजिकल नेम आसी शॉर्ट नोट रे शॉर्ट क्वेश्चन रे कॉमनली तके कहसे सागवान प्लांट बलिकरी कहसे साबुन गज बलिकरी कहसों हमें संबलपुरी है ना टिका बलिकरी कहसे पंजाबी रे एंड डिफरेंट लैंग्वेज रे काना काना कहसे यू कैन राइट दिस इन योर कॉपी फैमिली जे देखमा भर्बेनेसी फैमिली थ्रू क्वेश्चन आइस्तेला जे हमर टिक प्लांटा केन फैमिली के बिलोंग्स करसी इट बिलोंग्स टू भर्बेनेसी फैमिली स्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी ऑफ द वुड जे देखमा इट हैज बोथ सैपवुड एंड हार्टवुड तो इतर जे सैपवुड देखमा मतलब व्हाइट कलर एंड स्मॉल थिसी एंड हार्टवुड जे देखमा जेते पहले कट करमा सेटा पहला पहला ग्रीन थिबा एंड प्लीजेंट स्मेल दोतबा स्ट्रांग एरोमेटिक फ्रेग्रेंस दोतबा स्मेल आइसी बढ़िया स्मेल आइसी जदी सेटा के कट करके रखि दमा on seasoning that darken into brown mottled with darker streaks जदि सीजनिंग कर दिया गला सुखे दला पोरे धीरे धीरे डार्क ब्राउन कलर हेजबा औ गारगार गारगार करला भलिया दिसबा हमर डार्कर स्ट्रिक्स माने आसबा and the timber retain its fragrance to a great age बहुत बरस तक ई तार फ्रेग्रेंस ता तार जन स्मेल ता अच्छे से रिटर्न करके रखी ठीक timber plant teak timber jete देखो moderately hard more durable strong and that does not split crack or shrink when seasoned generally ताकि हमें सुखाले भी हेतकी shrink नहीं करे से भांगी नहीं जाए कटी नहीं जाए and they take good polish ये ताकि यदि polish मारा जिबा proper polish से नहीं पारसी right and utilization जे देखमा that is used for the construction of ship okay बिल्डिंग बनाबार लगे यूज करे बेड फर्नीचर जतबले भी हम फर्नीचर घेनबार के जासु बेड बनाबार लगी जासु नहीं तो सागुन गज रो के पचरासु ओके बिकॉज़ द सागुन गज रो जदी हम देखमा तरनु जन फर्नीचर प्रिपरेशन करे लॉन्ग ड्यूरेशन तक से टिकी करी रहसी वुड रेजिस्टेंट टू फंगाई इतर वुड ता फंगल अटैक न हुए सहज सो यूज्ड फॉर द पोल्स प्रिपरेशन करबार लागि यूज करे से बीम्स रे भी बनाबार लागि भी यूज करा जोतला आगो जते बेले घर माने देखमा बीम बना जोतला घरे से बीम रे देखमा सागुन गजर बीम लगा जोतला बिकॉज़ सनो फंगल अटैक नाही हुए डोर प्रिपरेशन विंडो फ्रेम्स बनाबार लागि फ्लोरिंग बन करबार लागि तले हमें फ्लोरिंग करबार लागि स्टेयरकेसेस हमर सीढ़ी बनाबार लागि यूज करि पारमा अदर कंस्ट्रक्शन वर्क रे तके यूटिलाइजेशन करि पारमा and another most important utilization that is it helps to make the sound boards that are कि हमर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स माने जन बना जेसी सेतरे जन बॉक्स माने थिसी से बॉक्स मान को जन वुड थिसी that is prepared from the teak wood another important plants that is the pines or pinus जाके कहूं गोटे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है नेकेड सीडेड प्लांट है and this is a tall evergreen tree which give rise to widespread horizontal branches इता कि देखो ऊपर का बहुत ग्रो करथिसी and the branches माने देथिबा horizontally right and ऊपर के धीरे काना तेल जोतबा टैपरिंग हेतल जाउथबा and लास्ट के काना देखमा जो दुरु देखमा तो केनता दिसतबा conical appearance दिसतबा branching is restricted to the upper part of the plant upper part रे branching से lower part रे की branches नहीं था and it gives a pyramid like appearance and main stem जी देखमा cylindrical and that is surrounded by scaly leaves cylindrical थी and small scaly leaves द्वारा से surround ही गिरी थी have long shoot and dwarf shoot the long shoot dwarf shoot थी and needle shape हमर leaves माने जे देखमा लंबा लंबा ही करी थी हमर needle भलिया थी and have tap root okay टैप रूट काहे के क्वेश्चन नो दैट जे हमर जदी सीड्स रु जदी हमर रूट बाहर छ ताके कहसो हमें टैप रूट बलिकरी कहसो एंड दिस इज मोनोइसियस माने काना बोथ मेल एंड फीमेल structure that is present on the same plant in case of your pinus plant
जे देखमा किछि स्पेसीज देखमा पाइनस रक्सबर्गी जेंटा कि मोस्टली इंडिया रे देखबार के मिलसी एंड अनदर वन वालिचियाना एंड पाइनस पिनास्टर दे आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द स्पेसीज ऑफ द पाइनस प्लांट इकोनॉमिकली यूज देखमा heavy construction works से ताकि यूज करे सी एंड एज दिस इज ए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म केसरे नॉन पोरस वुड देखबार के मिलसी सो दैट इटा के यूटिलाइजेशन कराय सी रेलवे फ्लोरिंग रे यूटिलाइजेशन कराय सी एंड शिप बिल्डिंग रे यूटिलाइजेशन कराय सी डोर बनाबार लगी पोल्स फ्रेम फर्नीचर बनाबार लगी तो के यूटिलाइजेशन करा जाय सी presence of resins one of the important chemicals in the present is resins make the wood resistant to decay सहजे नाइक सढ़े राइट सहजे इटा नाइक कोहे काटता बिकॉज़ इथरा गुटे केमिकल प्रेजेंट से तार ना होचे रेजिन्स एंड दैट इज यूज्ड इन द इनामेल प्रिपरेशन हमर जन टीथ रो जन कवरिंग हमर जन डुप्लीकेट टीथ माने लगा दउचे टीथ रो तर कवरिंग प्रिपरेशन करबार लगी यूटिलाइजेशन करा जैसे एंड से जन टीथ रो जन गोटे हमर बना जैसे ताके कहसे इनामेल जेंटा कि टीथ रो कवरिंग बोली कि कहउछो से इनामेल प्रिपरेशन रो लगी यूटिलाइजेशन करा जैसे रेजिन्स के एंड दिस इज आल्सो यूज्ड इन द बर्निशेस हमर जन बर्निश कलर ऐसे से बर्निश कलर प्रिपरेशन रो लगी भी रेजिन्स के यूटिलाइजेशन करा जैसी presence of turpentines another chemicals which is found in the pines that is the turpentines oil preparation करा जैसे turpentine रो and that is used as solvent for the paints and the varnish हमर पेंट्स मन को और बर्निश रे के पानी मिसने मिसोम बिकॉज़ रे पानी संगे मिसी नहीं पारे सेतिर लगी आउट सॉल्वेंट प्रिपरेशन कराय से तके पानी करबार लगी तके मारबार लगी कलर तारके कहा जैसे टर्पेंटाइन्स ऑयल वाली की कहा जैसे एंड दैट इज यूज्ड इन परफ्यूमरी इंडस्ट्री आल्सो परफ्यूम इंडस्ट्री में दिखाए यूटिलाइजेशन करा जैसे okay so these are the all about the timber plants so this is all about the different plants and their economic utilization that we have completed here last person our economic botany ro रहला जेंटा हेला germ plasm conservation only one lecture is left for your economic botany and in the upcoming classes we will continue our anatomy part only that means next amar गोटे lecture सरला परे माने approximately हमें काली कंप्लीट कर दमा हमर टिम्बर प्लांट के एंड हमर इकोनॉमिक बॉटनी पर्सन के एंड इन द नेक्स्ट हमें बहुत जल्दी जल्दी जिबार अछि एनाटॉमी पार्ट के ओके जेनेटिक्स अप्रोक्सीमेटली 90% कवर ही सारी छी हमर इकोनॉमिक बॉटनी कंप्लीट हे जवा काली एंड हमर रेस्ट रह गेला खाली एनाटॉमी के जिंदगी जल्दी जल्दी सारवा के ट्राई करवा I think you all enjoyed this session. If any doubt, you can write in the comment section. And for more updates, you can join our WhatsApp or Telegram channel. Please like, share, and subscribe our channel. Thank you.